Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 3rd is going on rotation and revolution of the earth, or this is a revision time. Okay, so in the last video we discussed what is the rotation and what is the revolution and their effect. Okay, and today we revise here the effect of tilt axis on day and night, or after that we discuss the changing season. Okay, so first of all, tilt axis means inclination. We already discussed in the last video कि हमारी अर्थ जो है लिटिल बिट टिल्ड है, नॉट प्रॉपरली स्फेरिकल है. ओके, सो if we talk about perpendicular angle check करें तो ये 23.5 है. if we check the angle from the orbit plane, so orbit plane से इसका जो एंगल है वो 66.5 है. ओके, सो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे डे और नाइट के ऊपर, तो वो हम डिस्कस करेंगे हियर. ओके, सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ड एट द एंगल ऑफ 66.5 फ्रॉम द ऑर्बिट प्लेन. कि ऑर्बिट प्लेन से जो एंगल है अर्थ की इंक्लेशन का टिल्ड होने का वो है आपका 66.5. सो thus the axis of the earth in its orbit around the sun remain tilt to one side. means जब ये अर्थ सन के सराउंडिंग ऑल साइड रिवॉल्व कर रही है तो जो इसकी इंक्लेशन है वो ऑलवेज वन साइड रहती है. ओके, जस्ट सी दिस sun and this is your orbit where earth revolve around the sun and its inclination toward the sun like this. तो इसकी जो inclination है सेम वन साइड है. ओके, like this, here also same, here also same, like this. So same inclination. Okay, so this is a position of this one when earth की जो position है here होगी. So that time sun rays vertically on the tropic of Cancer on the 21st June. Okay, that time means summer is going on in the northern hemisphere and southern hemisphere में winter होगा because sun rays fall slanting in the southern hemisphere. Okay, on the position of here, this is your sun vertical on the tropic of Cancer. Okay, so due to inclination की वजह से आपकी सन की रेज है वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है एंड सन रेज वर्टिकली पड़ती हैं. ओके, तो दैट्स व्हाई here summer is going on because sun rays fall vertically and sun rays slanting on the southern hemisphere. So that time winter season is going on in the southern hemisphere. Okay, and after that we talk about next is this portion. So here when earth revolve करी around the sun, जो कि earth की position यहाँ होगी, so that time southern hemisphere towards the sun है and northern part opposite है. Okay, so that time sun is fall vertical on the tropic of Capricorn. Just see here, this is your position of when sun rays vertically on the tropic of Capricorn. This is your Capricorn and this position on 22nd December. Okay, तो that time southern hemisphere में summer season होगा और sun rays slanting on the northern hemisphere. तो that time winter is going on in the northern hemisphere. Okay, so after that the changing season. So the phenomena of change of season is caused due to two reasons. Two reason है जो हमारे सीजन चेंज हो रहे हैं. ओके, एक तो हो गया रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन बिकॉज सन रेज जब वर्टिकल पड़ रही है तो नदर्न हेमिस्फीयर में दैट टाइम यहाँ पर समर सीजन हो रहे हैं और जब की अर्थ यहाँ पहुंची तो सन रेज वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो दैट टाइम हियर ऑटम सीजन गोइंग ऑन and when earth position here तो sun is vertical on the southern hemisphere, तो that time southern hemisphere में summer season और northern hemisphere में winter season. Okay, when earth position here that time sun vertically on the equator on 21st March, so that time spring season is going on in other hemisphere. Okay, so this is your means first के the revolution of the earth around the sun, जो season change हो रहा है first cause के revolution of the earth around the sun. Second, inclination.
जो अर्थ की इनक्लेशन इसकी वजह से सन रेज सम टाइम वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सम टाइम वर्टिकल ऑन द इक्वेटर, सम टाइम वर्टिकल ऑन द कैप्रिकॉर्न, और सम टाइम अगेन वर्टिकल ऑन द इक्वेटर. ओके, सो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द अर्थ इनक्लेशन. ओके, तो सेकंड पॉइंट आएगा द इनक्लेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट प्लेन से जो एंगल जो 66.5 है, तो अर्थ की इनक्लेशन की वजह से भी सीजन चेंज हो रही है. ओके, सो नाउ next point we discuss here solistic and equinox. Okay, so first of all, what is the solistic? So first we discuss a solstice. So solstice means the day on which the midday sun shine vertically overhead at the tropic of Cancer or tropic of Capricorn. Means जब sun आपका vertical पड़ेगा tropic of Cancer, or this is possible on the 21st June, and sun vertical on the tropic of Capricorn, it is possible on 22nd December. Okay, so when sun vertical is on the tropic of Cancer and Capricorn, so that time the day duration is longest in both hemisphere, northern or southern hemisphere. Okay, so इसको बोलते हैं solistic. Means when day duration is the longest is called solistic. Okay, so solistic कब होता है? On 21st June when sun vertical on the tropic of Cancer, and 22nd December when sun vertically on the tropic of Capricorn. Okay, so that time is called solistic. When day duration is the longest is called in both hemisphere. Okay, northern as well as southern. So northern में sun vertical on the 21st June and 22nd December vertically on the tropic of Capricorn. So that day we call solistic because that time duration of the day is longest. Now equinox, the day on which the midday sun shine vertically overhead at the equator, or the duration of the day and night is equal, is called equinox. Equinox means when day and night are equal. Okay, so just see here. So sun is vertically on the equator. Okay, this situation occurs annually two times. First is 21st March and 23rd September. Okay, so 2 days in the whole year when sun rays vertically on the equator, so that times called day and night are equal because sun rays fall vertically on the equator and both sides equally. Okay, so that time sun vertically on the equator, so day and night are equal. So equinox means when day and night are equal is called equinox. Okay, so first we talk about here 21st June. So 21st June, the 21st June, the noon rays from the sun fall vertically on the tropic of Cancer. तो 21st June को this position of earth होगी and here sun होगा, and that time sun vertically on the tropic of Cancer because northern pole tilt towards the sun and south pole opposite of that. So 21st June, first point, on the June 21st the noon rays from the sun fall vertically on the tropic of Cancer. This is because क्यों ऐसा हो रहा है? The north pole is tilted towards the sun. Okay, second point, the northern hemisphere has longest day and shortest night. So that time northern hemisphere में sunlight ज़्यादा रहेगी तो day duration long होगी और night short होगी. Okay, and northern pole टूवर्ड्स द सन होने की वजह से 24 आवर्स के लिए डे में रहेगा. देखो आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, दिस लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट मींस कि इट इज अ इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द लाइट पार्ट फ्रॉम द डार्क पार्ट. जो पार्ट सन की तरफ है वो फुल डे में होगा और जो अपोजिट है वो नाइट में होगा. सो देखो हियर व्हेन सन वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट टाइम नॉर्दर्न पोल टूवर्ड्स द सन है, दैट मींस यहां पर 24 आवर्स के लिए डे रहेगा. ओके, एंड next is on the other hand south pole outside the circle of illumination. जो circle of illumination और that time southern pole outside the circle of illumination outside है, तो यहाँ पर क्या होगा 24 आवर्स के वो डार्क रहेगा क्योंकि लाइट आपकी यहाँ तक की आ रही है, इसके आगे नहीं जा रही है. ओके, सो दैट टाइम
24 आवर्स के लिए डार्कनेस रहेगी यहाँ पर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज we talk about 22nd December. Just see this is full diagram. So here we discuss now, this is your sun, and when earth revolve around the sun like this, so when sun is here, so that time sun particular on the this position on the 21st June, this position, or this position on 22nd December. Clear? So on 22nd December, sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn. Okay, and that time southern pole tilt towards the sun, so that's why here 24 hours के लिए डे रहेगा, and north pole outside the circle of illumination, that's why here darkness रहेगी 24 hours के लिए during the December month. Okay, so north pole outside, and summer season is the southern hemisphere, because sun is vertically on the southern hemisphere there, so that's why here summer season is going on, and here winter season, because sun rays fast slanting that here. Okay, so same here, the position of the earth on 21st June. अब 21st June को आपका अर्थ like this, just earth revolve करिए around the sun, so आपके अर्थ बिल्कुल सामने आ जाएगी सन से, so that time sun rays fall vertically. Just see here, on the 21st March, sun rays fall vertically on the equator, सो 12 आवर्स की डे एंड 12 आवर्स की नाइट होगी. ओके, तो 21st मार्च को नदर हेमिस्फीयर में हमारा होगा स्प्रिंग सीजन. 21st मार्च इन नदर हेमिस्फीयर आपका होगा स्प्रिंग सीजन. ओके, और 21st मार्च को सदर हेमिस्फीयर होगा ऑटम सीजन. ओके, सो दिस ईयर 21st मार्च और 23rd सितंबर ऑलमोस्ट सिमिलर, but difference that on the 23rd September sun rays fall vertically on the equator, so they are not equal, but difference that कि 21st मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन था और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है, लेकिन 23rd सितंबर को यहाँ स्प्रिंग की जगह ऑटम सीजन आ जाएगा. ठीक है, कि मीन्स ड्यूरिंग द 23rd सितंबर, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन इज गोइंग ऑन एंड सदर्न हेमिस्फीयर spring season is going on. Okay, so this is your topic to discuss here. First of all, we discuss here what is the effect of tilt axis on day and night, and after we discuss solstice, equinox, and main feature out on 21st June and 22nd December, 21st March or 23rd September. Okay, thank you.